This is the second video of lesson number 8, quadrilateral constructions and types. In the first video, we have seen the 4 types of construction, means how to construct different types of quadrilaterals in different situations. Means whatever the information is given, as per the given information, how to construct the quadrilaterals. This we have seen. Now let us move ahead with the next point. Before moving, let us recall point is there. By putting some conditions on sides and angles of a quadrilateral, we get different types of quadrilaterals. Means when we take different conditions for the sides and for the angles of the quadrilateral, then from that we get different types of quadrilaterals. Means the quadrilaterals of different types. You already know 2 types of quadrilateral, namely rectangle and square. Up till now we have learned only two quadrilaterals, which rectangle and square. Even properties also we know, its construction also we have done. Now we will study some more properties of these types and of some more types of quadrilaterals through activities. Let us begin with the first type of quadrilateral, rectangle. Even I can also say, let us revise it. Okay, what point is given? If all angles of a quadrilateral are right angles, it is called a रेक्टेंगल. अगर क्वाड्रिलैटरल के चारों भी एंगल अगर 90 डिग्री है, ओके, इफ दे आर राइट एंगल्स, इफ दे मेजर 90 डिग्री, देन such a quadrilateral is called as rectangle. Okay, here diagram is shown. Quadrilateral A, B, C, D. We can see all the 4 angles. The sign is shown of 90 degree, means all are right angles. Okay, such quadrilateral is called as rectangle. Among the 5 elements given to construct a quadrilateral, at least 2 have to be lengths of adjacent sides. You can construct a quadrilateral if 2 adjacent sides and 3 angles are given. Means what does it mean? Now in the point of construction we have seen that for constructing a quadrilateral, minimum information of 5 elements must be given. 5 elements means suppose 4 sides are there, 4 angles are there, diagonals are there. Okay, these are called elements. Okay, sides, angles, diagonals, they are called elements. In total 10 are there. Out of these 10, minimum 5 should be given. Then only we can construct the quadrilateral. But in case of these quadrilaterals, now when it is said that it is a rectangle means we know that the opposite sides are congruent. Okay, and the measure of the 4 angles is 90 degree. Means already we know the elements. Means only what is necessary, only the word rectangle is necessary. Means we understand because we know the properties of rectangle. So that is what is given here in this. Minimum at least 2 have to be lengths. Means suppose if the example it is given that draw a rectangle, then only if length is given, okay, then that is sufficient for us. And minimum which length should be given of adjacent sides. Adjacent side means length and breadth. If one length is given, one breadth is given, that is sufficient. Okay, and if the quadrilateral is other than rectangle, then minimum 3 angles must be given, so that we can find the 4th one. Because we know that sum of the 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. Is it clear? Means minimum 2 sides and 3 angles must be given. Let us move ahead. From the definition, we know that all angles of a rectangle are right angles. So if you know 2 sides, then you can construct a rectangle. It is given here. Means suppose only if length and breadth is given, means adjacent sides are given. Okay, then
by using that information we can construct the rectangle. Activity is given because this topic we are going to learn through activity. Okay, what is the activity? Construct a rectangle PQRS. Here it is drawn. Okay, it is constructed here by taking two convenient adjacent sides. Name the point of intersection of diagonals as T. Means where two diagonals intersect each other. That point is named as T. Using divider and ruler, measure the following lengths. Okay, what we have to measure? We have to measure here point wise it is given. Lengths of opposite sides. Let us measure the lengths of opposite side. The length of PQ is 2.8 centimeter. Let us measure the length of side SR. It is also 2.8 centimeter. Okay. Now let us measure the length of QR. It is 4.7 centimeter. Let us measure the length of PS. It is also 4.7 centimeter. Right? So from this we understand that the opposite sides are congruent. Means our first 2 points are over. Opposite sides we have measured. Then the length of diagonals PR and QS. What is the length of diagonal PR? It is 5.5 centimeter. Right? Then what is the length of QS? It is also 5.5 centimeter. Means the diagonals are congruent. These are properties. Opposite sides are congruent, diagonals are congruent. These are the properties of rectangle. This we are learning through activity. Then number 4th point is lengths of segment PT. PT means from vertex to the intersection of diagonals. Okay, let us measure PT and TR. The length of PT is 2.7 and something more, or even we can say 2.7, and TR it is also almost 2.7. Means from this what do we understand? The point at which the diagonals bisect each other, the diagonals intersect each other. Okay, from that point the vertices are at equal distance. Means what? The diagonal QS bisects the diagonal PR. Bisects means cuts into two equal parts. That is called bisects. Okay. The same way, even number 5th point is given. Length of, if you measure the length of QT and ST, you will find it equal. Means what? We can say that diagonal PR bisects the diagonal QS. Right? From this what do we learn? We learn that opposite sides of a rectangle are congruent. Okay, rectangle की opposite sides congruent होती है. Diagonals of a rectangle are congruent. Diagonal जो होते हैं वो equal length के होते हैं. Congruent है ना, equal length. And diagonals of a rectangle bisect each other. दोनों भी diagonal एक दूसरे को ऐसे पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि वो दोनों भी diagonal gets equally divided into 2. Now let us move ahead to the next type of quadrilateral, that is square. What is the main point given? If all sides and all angles of a quadrilateral are congruent, it is called a square. Okay? अब चारों एंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 90-90-90-90 का करना पड़ेगा. वैसे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं. ऑल साइड्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी चारों साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए. ओके, देन सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड एज स्क्वेयर. रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी दी थी? देयर इट वाज टोल्ड इफ ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स देन इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल. ओके, स्क्वेयर में क्या दिया है? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. ओके, लेट अस लर्न थ्रू एक्टिविटी. कंस्ट्रक्ट अ square, okay, whose all sides are equal and all 4 angles are equal, means congruent to each other. Okay,
Then we have to measure the lengths and even angles also. Angles are 90 degree. The lengths of diagonals we have to measure. What is the length of diagonal AC? It is 4 centimeter. What is the length of diagonal BD? It is 4 centimeter. Okay, that is the first point given. Length of diagonal AC and BD. The lengths of two parts of each diagonal made by point E. ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है E, ओके, उसकी वजह से जो डायगोनल डिवाइड हो रहे हैं, ओके, उसका क्या है? देखो 2 सेंटीमीटर, देन दिस आल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस BE 2 सेंटीमीटर, ओके, एंड देन ED 2 सेंटीमीटर. मीन्स व्हाट? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स गेट इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 parts. Okay. Number 3, all the angles made at point E. This is very important now. Okay. In this, if you measure the angles, now suppose, now see, I have adjusted the protector. Okay. 90 degree, 90 degree. Okay. And it means these two angles are 90 degree. Okay. Let us measure this. See this, 90 degree, 90 degree. Okay. Means at the point of intersection, all angles measure 90 degree. This is also one more property. What? The diagonals, they bisect each other as well as they are perpendicular to each other. Okay? जैसे मेजरमेंट आता है सामने प्रॉपर्टी तुरंत तैयार हो जाती है. Okay. Number 4, parts of each angle of the square made by each diagonal. Example, angle ADB. ADB means this angle. Okay. Let us measure the angle. Angle भी measure करते हैं. You see, 45 degree. Means what? The diagonal bisects the angle. यानी ये सारे diagonal क्या है? Angle bisector भी है. Okay. Angle bisector we have learned in standard 7th. Okay. So from this, what do we learn from this? We learn 4 properties. What is the first property? Diagonals are of equal length. Square के diagonal equal length के होते हैं. That is, they are congruent. Number 2, diagonals bisect each other. Okay, ये दोनों भी diagonal एक दूसरे को क्या करते हैं? Bisect करते हैं, यानी दोनों भी एक दूसरे को 2 equal parts में कट करते हैं. Then diagonals are perpendicular to each other. ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कौन सा भी एंगल मेजर करो 90 डिग्री का मिलेगा. मीन्स इवन वी कैन से दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. देन डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स. ये जो डायगोनल होता है, ओके, ये डायगोनल किसको बाइसेक्ट करता है? अपोजिट एंगल. ये डायगोनल किसको बाइसेक्ट करता है? अपोजिट एंगल. ओके. हर एक डायगोनल वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रोम्बस. ओके. अब रोम्बस में क्या है? इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली, देन ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक स्क्वेयर. ओके. 90 डिग्री का एंगल नहीं है. 90 डिग्री का एंगल अगर छोड़ दिया तो बाकी ये पूरा स्क्वेयर जैसा है. और इसको क्या किया है? इसको थोड़ा सा स्क्वेयर को ऐसा ढकला है, थोड़ा सा एक साइड में प्रेस किया है. ओके. नहीं तो बाकी पूरा स्क्वेयर जैसा है. ओके. ये ऑल 4 साइड्स इक्वल. देखो दिस साइंस आर गिवन हियर. ओके. 4 साइड्स इक्वल. डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके. एंगल 90 डिग्री का है. ओके. सारा के सारा स्क्वेयर जैसा है. ओके. सिर्फ फर्क क्या है कि चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते. ओके. अगर ऐसा है, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज रोम्बस. एक छोटा सा फर्क है कि एंगल डिफरेंट हो रहे हैं. ओके. इसीलिए उसको इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एज स्क्वेयर, इट इज कॉल्ड एज रोम्बस. व्हाट इज इट्स इंफॉर्मेशन? इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कॉन्ग्रुएंट, ये तो स्क्वेयर में भी है, इट इज कॉल्ड अ रोम्बस. ओके. लेकिन यहां पर 90 डिग्री चारों एंगल का कुछ नहीं दिया है. ओके. सो दैट मेक्स द डिफरेंस. ओके. एक्टिविटी. हियर डायग्राम इज ड्रॉन. रोम्बस EFGH.
Okay. And then what we have to measure? Measure the opposite angles of the quadrilateral and angles at the point M. Let us measure the angle F. How much it is? It is almost 65 degree. How much it is? 65 degree, you can see. Okay. Then at angle G, it is almost 100 and more than 15, 17, 18 something. 115 and this 65. Okay. This angle measures 65 degree, this angle measures 115 degree. Let us measure this angle. How much it measures? 115 degree. How much this measures? 65 डिग्री. देखो यहां पर ही क्लियर हो रहा है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि 90 डिग्री के नहीं है. ओके. अगर ये चारों एंगल अगर 90 डिग्री के होते हैं तो ये क्या बनेगा? स्क्वेयर. ओके. लेकिन 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया? रोम्बस. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डन. देन नंबर 2, मेजर द टू पार्ट्स ऑफ एवरी एंगल मेड बाय द डायगोनल. ओके. डायगोनल के जो दो पार्ट बने हैं वो उसकी लेंथ मेजर करनी है. लेट अस मेजर. इट इज 2.3 सेंटीमीटर, दिस 2.3 सेंटीमीटर. यानी ये दोनों पार्ट्स इक्वल है. मीन्स व्हाट वी कैन से दैट सेगमेंट एफ एम एंड सेगमेंट एच एम आर कॉन्ग्रुएंट. यानी ये जो डायगोनल एफ एच है ये इक्वली डिवाइड हो रहा है. किसकी वजह से? ये डायगोनल ईजी की वजह से. डायगोनल ईजी का भी ऐसा ही है. ये डायगोनल एफ एच है ना, ये भी दूसरे डायगोनल को बराबर दो पार्ट्स में, दो इक्वल हिस्से में कट करता है. ओके. एंड देन दिस एंगल लेट अस मेजर. ये रोम्बस की स्पेशलिटी होती है. ओके. उसको कितना भी ढक लो साइड में, ये जो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन होता है वो 90 डिग्री रहता है हमेशा. ओके. ये चेंज होता है. ओके. सो दिस एंगल मेजर्स 90, 90, 90, 90. राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट, measure the lengths of both diagonals. Measure the two parts of the diagonals made by point M. That already we have done. Then from this what properties we are learning from this? हमें सीखने के लिए मिलता है opposite angles are congruent. Okay. सिर्फ 90 डिग्री के नहीं होते. Then diagonals bisect opposite angles of the rhombus as it happens in the square. Square में भी ये होता है. Diagonals bisect opposite angles of a rhombus. Okay. And the third property is diagonals bisect each other and they are perpendicular to each other. Okay. Diagonals, ये जो दोनों डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी है. ओके. स्क्वायर में भी ऐसा ही है, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर है. स्क्वायर में भी है. ओके. ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. स्क्वायर में चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ओके. सिर्फ एक इतना छोटा सा फर्क स्क्वायर को क्या बना देता है? रोम्बस. राइट. नाउ आफ्टर दिस सॉर्ट एग्जांपल्स आर देयर. टोटल 3 examples are there, sword examples. Okay. You must be having the textbook. You go through the sword examples in detail. Okay. Detail में देखना है सारे के सारे. Okay. Now after this directly I will start practice set number 8.2. In practice set number 8.2, total 4 examples, here on this page 4 examples are given, on page number 46, and on page number 47 3 examples are given. Okay. Out of which first 3 are constructions. Okay. Draw a rectangle, draw a square, draw a rhombus. Okay. And our remaining other 4 are to solve the examples using the properties of quadrilaterals. Let us solve it in the notebook.
Let us start with the first example. What is the first example? Draw a rectangle ABCD such that length of AB is equal to 6 centimeter and length of BC is equal to 4.5 centimeter. So as per our rules, first draw the rough diagram. Here I am using pen. In the first video I explained the reason. You must be able to see whatever I am drawing, writing, okay, you must be able to see it clearly. So because of that reason I am using pen, or else here strictly pencil must be used. That also pointed in first video, all the rules are explained clearly. Okay, so draw a rectangle ABCD such that length of side AB is given 6 centimeter and BC is given 4.5 centimeter. 4.5 centimeter. And what is told? That it is a rectangle. What information is given? It is a rectangle. Means from this only we understand that all the four angles measure 90 degree. Only that one word, this word, rectangle word only, how many things it tells us? That opposite sides are congruent. Means this is 6 centimeter, means this is also 6 centimeter. This is 4.5 centimeter, means this also measures 4.5 centimeter. Okay, all angles measure 90 degree. Means total how many elements are over? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total we are having 8 elements now. And we need only 5 elements for the construction of quadrilateral. So start constructing. Okay, so what base we have to take? Length of AB is given 6 centimeter. Write the names of the endpoints. AB 6 centimeter. Right. Then we have to take the measure of the angle from the vertex B, 90 degree, point is fixed. From the point A also 90 degrees angle, we have fixed the point. Okay, with the help of, now how much side we want? This also means you have to take, you have to gauge it. 4.5 centimeter means almost, you see now this much we want, then you can take 5 or 5.5 something. Okay, this much distance you take. That much distance is taken. Okay, what is the next step? Now this distance we want 4.5 centimeter. Okay, this 4.5 centimeter we are going to take it with the help of compass. Right, now without changing the distance and adjusting the still point on the point B, take the intersection on this line and the same process repeat it from the point A. It is done. Now we got here two intersections. Okay, according to rough figure, what is this point? C. According to rough figure, this point is D. Our quadrilateral ABCD will get over. Okay, after joining this, join the point C and D. Point C and D is joined. If you measure these two angles, even you will find that they may also measure 90 degree. Right? Write the measure of this distance, 4.5 centimeter. This is 4.5 centimeter. Okay, that's all. This much is sufficient for us. This our construction is over. Let us start solving second example. Question is, draw a square WXYZ with side 5.2 centimeter. Okay. Now here only one element is given, or one information regarding only one element is given, 5.2 centimeter. Right? But
from this word square we understand everything, that the length of all four sides is 5.2 centimeter and all four angles measure 90 degree. Okay, by using this information we have to construct the quadrilateral. This is the rough diagram. Name the quadrilateral W, X, Y and Z. Length is 5.2 centimeter. All angles measure 90 degree because it is a square, right? And then let us start constructing. 5.2 centimeter we have to take distance. Name of the points W, X, distance is 5.2 centimeter. Then with the help of protractor from the point W, mark the measure of angle 90 degree. From the point X also, repeat it same, measure of angle 90 degree. Okay, how much distance we want? 5.2 centimeter. Then randomly you take 6 centimeter or something like this. Okay, so from that we will take 5.2 with the help of compass later on. Right, what is the measure of this angle? 90 degree. This angle 90 degree. Okay, now with the help of compass and scale, take the distance 5.2 centimeter, or even the same, this 5.2 centimeter distance you can check it here. See here, almost it matches, right? The same you repeat it here. Okay, take intersection from the point X and by adjusting the steel point on the point W. Okay, now join these 2 points. The 2 points are joined. What is the name of this point? It is Y. What is the name of this point? It is Z. Measure of this angle 90, this 90. And as it is a square, the length of all the 4 sides is 5.2 centimeter. And here our construction is over. Okay. Total information means when you feel that the construction is over, after that check all the things, whether all the things are entered there in the construction or not. Names of 4 vertices, length of 4 sides, then measures of the 4 angles. Now as it is here 90 degrees, so only just we have to give the sign. Okay. But if it is other than 90 degree, then show the sign and write the measure. Now let us move to example number 3. Draw a rhombus. When you read the word rhombus, there only you should understand length of all 4 sides is same. Okay. Diagonals, they are perpendicular bisector. Okay. Their length is different, but they are perpendicular bisector. And what is it? All the 4 sides are of equal length and opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. Okay. So let us draw the rough diagram. Rhombus कैसे होता है? यानी स्क्वायर जैसा ही होता है, एक साइड में ढकला हुआ होता है ऐसा, एक साइड को उसको प्रेस किया है. ओके. K, L, M and N. What is the length of one side? 4 centimeter. This also measures 4 centimeter. This also measures 4 centimeter, 4 centimeter. And measure of angle K is 75 degree. Then what is the measure of this angle? 75 degree. Okay. Now for the construction, what is expected? That minimum these 2 angles must be given. ओके. अब ये दोनों एंगल तो दिए है. ओके. लेकिन अब इसकी भी जरूरत है. ओके. सो व्हाट इज द मेजर ऑफ दीज 2 एंगल्स? 75 plus 75 degree. ओके. K angle K plus angle M is equal to 75 degree plus 75 degree is equal to 150 degree. ओके. कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके 4 एंगल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्री.
ओके, तो ये दोनों एंगल का कितना आएगा 360 माइनस ये दोनों का एंगल. ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एन प्लस मेजर ऑफ एंगल एल इज इक्वल टू 360 माइनस 150. आंसर मिलेगा 210 डिग्री. ओके, 210 डिग्री. ये दोनों एंगल का मेजर कितना है 210 डिग्री. अब ये दोनों एज इट इज अ रोम्बस दे आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट यानी दोनों का भी मेजर सेम है, यानी इसको आधा आधा करना पड़ेगा. ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 120 इज इक्वल टू 105 degree. Right? Now by using this information, now here we can write the measure of this angle is 105 degree. By using this information, we can construct the quadrilateral. Let us draw. What is the length of KL? It is 4 centimeter. Take 4 centimeter distance. Write the names of the point KL, 4 centimeter distance. Okay. Then what is the measure of angle K? It is how much? 75 degree. 75 degree. Now see here 0, 10, 20, 70 and there's 75 here. What is the measure of angle L? Measure of angle L it is, we have calculated, measure of angle L is 105 degree. Now see from this 0, 100 and this 105. Right? Join the point measure of this angle is 75 degree. Okay, later on you may forget, so there only you write it. Measure of this angle is 105 degree. Right? Now as it is told that it is a rhombus. Rhombus means length of all four sides is equal. Okay, this we have taken 4 centimeter. Okay, with the same distance make a arc here this side. Done. Repeat the same procedure from the point K. Done. Okay. Means whatever these intersections we got, these intersections are point M and this is point N. Alright. Join the point N and M with the help of scale. Right. This distance we have taken 4 centimeter, this 4 centimeter, and if you measure this also you will find 4 centimeter. This angle is 75 degree, so this angle is also 75 degree. This is 105, so this also 105 degree. Names of all four vertices is written, length distance of 4 sides is written, measure of 4 angles are written. That's all. Our construction is over perfectly. Let us move to 4th example. We read the example. If diagonal of a rectangle, diagonal means the segment joining the opposite vertices, is 26 centimeter and one side is 24 centimeter. Find the other side. Okay. What type of quadrilateral is mentioned here? Rectangle. So draw a rough diagram of a rectangle, so that, why to draw a rough diagram? So that we get idea exactly what is it. Diagonal is mentioned, then draw the diagonal. Okay. What is told? If the diagonal of a rectangle is 26 centimeter, what is the length? 26 centimeter. Let this diagonal be PQRS. Alright. And then more, what is told? And side is 24 centimeter. Let the length of this side is 24 centimeter. Then question is asked, find the other side. Other side means which side? Now we know that this is 24 centimeter means this is 24 centimeter. Okay. Other side means length of PQ we have to find out.
Let us solve it. Then now all the things you have to mention in words. As it is a word problem, everything we have to mention in the word problem. So we are going to write, let quadrilateral PQRS be the given rectangle. Okay. All this, everything we have to mention in words. So therefore, length of PR is equal to 26 centimeter. What is it? Diagonal. And length of QR means length of one of the side is equal to 24 centimeter. Okay. Now we know the property of rectangles. This angle measures 90 degree. Now when we see this, only just see the half part of this. Okay. What do we understand? Right angle triangle. Okay. Hypotenuse, base, height means we remember the theorem of Pythagoras. Okay. So directly we can write in right angle triangle. Here I am writing shortcut RT means right angled triangle. What is the name of the right angle triangle? PQR. PQR by the Pythagoras theorem. According to theorem of Pythagoras. What? Length of PR square. PR square means hypotenuse square is equal to length of QR square plus length of PQ square. Put the values. 26 square is equal to 24 square plus length of PQ square. So therefore, what is the square of 26? It is 676 is equal to square of 24 is 576 plus length of PQ square. Okay. So therefore, 676, this plus 576 comes to the left side. It becomes minus 576 is equal to length of PQ square. So therefore, what is the answer of these 676 minus 576? Answer is 100 is equal to length of PQ square. Okay. अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो. So therefore, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी क्या रहेगा? ओनली लेंथ ऑफ PQ, यानी वो स्क्वायर रूट का साइन और ये स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बचेगा ओनली PQ. ओके. सो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू रूट 100. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ रूट 100. व्हाट इज इट? सो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 10. Okay. What is 10? 10 is nothing but the length of the side, and that also in centimeter. Right? So write the final answer. What is our final answer? As the question is asked in words, we have to write the answer also in words. So length of the other side of given rectangle is 10 centimeter. Let us move to example number 5. Lengths of diagonals. Here length of what is given? Diagonals, not side, diagonals of rhombus. Rhombus means square जैसा ही होता है लेकिन एक साइड में ढकला हुआ. ओके. ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. डायगोनल की लेंथ दी है और इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. डायगोनल की लेंथ दी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. ओके. तो चलो रोम्बस की एक रफ डायग्राम निकालते हैं. ये रोम्बस की रफ डायग्राम.
उसके डायगोनल्स। ओके, रोम्बस को नाम देते हैं रोम्बस ABCD। ओके, अब ये डायगोनल की 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी ये आएगा 16 सेंटीमीटर एंड दिस विल कम 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू start solving. As in the previous example we have written the same way, right? Let quadrilateral ABCD be the required what? Rhombus. Right? Now what things are given? Length of BD is equal to 16 centimeter and length of AC is given 12 centimeter. Right? Okay. Then we know that the diagonals they bisect each other. यानी ये जो diagonal AC है ये इसको bisect करता है. Okay. Means from this, for this point I will write the point M. Let the point of intersection be point M. हमें मालूम है डायगोनल AC डायगोनल BD को दो पार्ट में बराबर इक्वली कट करता है, तो ये टोटल 16 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये कितना आएगा, ये पूरा 12 है तो ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 6। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट हियर बट इन वर्ड्स। ओके, therefore length of AM is equal to 1/2 of length of AC। ये देखो AM की लेंथ कितनी होगी, जितनी AC की लेंथ है उसकी आधी, is equal to 1/2 of 12 is equal to 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर लेंथ किसकी मिल गई, AM। ओके, और CM की भी कितनी है, द सेम वे 6 सेंटीमीटर। इवन वी कैन ऑल्सो राइट द लेंथ ऑफ CM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AM 6 सेंटीमीटर, CM 6 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं किसका फायदा होता है। देन लेंथ ऑफ BM, व्हाट इज दिस, BM। ओके, BM की लेंथ कितनी है, 1/2 of BD, 1/2 of length of BD is equal to 1/2 of total कितना है 16, so is equal to 8 centimeter, means length of BM is equal to 8 centimeter, and even we can write length of DM is equal to 8 centimeter। इसकी जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन देखते हैं। ओके, नाउ सी, now we know that the two diagonals they intersect each other at the point of intersection and they are perpendicular to each other। 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल, दोनों साइड की लेंथ मालूम है एंड 90 डिग्री के अपोजिट की साइड निकालनी है, यानी हाइपोटेन्यूज। अगेन थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। ओके, बट दैट वी हैव टू राइट इन वर्ड्स। What we have to write? Diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Perpendicular to each other, right? So therefore measure of angle, अब ये ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। ओके, BMC, मेजर ऑफ एंगल BMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, BMC।
in right angle triangle BMC, okay, length of, what is the hypotenuse? BC. BC square is equal to length of BM square plus length of CM square. Alright? So therefore, length of BC square, this we have to find out, is equal to, what is the length of BM square? We have found out BM, length of BM is 8 square plus CM square, it is 6 square. 8 square, 8 8 is 64 plus 6 square means 6 6 is 36 is equal to 64 plus 36, it is 100. What is this 100? 100 is nothing but the length of BC square. Okay? अब हमें BC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें BC की वैल्यू चाहिए. यानी BC की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. ओके, अब तो इसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या मिलेगा? BC. इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो रूट 100. ओके, एंड रूट 100 की वैल्यू क्या है? 10 एंड इट इज सेंटीमीटर. राइट? तो पहले एग्जांपल का भी आंसर 10 सेंटीमीटर आया था, इसका भी आंसर 10 सेंटीमीटर मिला है. ओके, लेट अस राइट द फाइनल आंसर. बट व्हाट इज द फाइनल आंसर वी हैव टू राइट? सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और एक सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसमें पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, अब रोम्बस की तो सारी साइड इक्वल होती है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ BC. हमें बेसिक की लेंथ मिली है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज द फाइनल आंसर. And this you have to write it in words. What words? Side of the, this we have written in words, and then perimeter of rhombus. Answer. Perimeter of rhombus is 40 centimeter. That's all. Let us move to 6th example. Find the length of diagonal of a square with 8 centimeter. Draw the rough diagram. Rough diagram ड्रॉ करने के बाद तुरंत पता चलता है कि एग्जैक्टली करना क्या है. ओके, दिस इज अ स्क्वायर. 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब देखो, दोनों साइड की लेंथ मालूम है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बना हाइपोटेनस, ये दोनों हो गई साइड. पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग दैट थ्योरम यू कैन फाइंड आउट. ओके, सो लेट दिस नेम दिस एज A B C D. लेट quadrilateral ABCD be the required square. Okay, now I am not going to explain much. Okay, directly I will keep on solving. Okay, now what is given? Length of one side means suppose AB is equal to given 8 centimeter. Therefore length of BC also is equal to 8 centimeter. That is the property of the square. Okay, here you can write answer that sides of square are congruent. This reason also can be given because it is a word problem, so reason should be given. So therefore in right angled triangle, अब कौन सा बना राइट एंगल ट्राइंगल? ABC. ABC by Pythagoras theorem what is the hypotenuse? AC. Length of AC square is equal to length of AB square plus length of BC square. What is the length of AC square? That we have to find out.
डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64 इज इक्वल टू what answer we will get 128. What is this 128? Length of AC square. Okay, so therefore length of AC is equal to under root 128. Under root 128. Now 128 is not the perfect square of any number. Okay, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है उसको, तो अंडर रूट 64 मल्टीप्लाइड बाय 2, 64 टू 128, देखो 64 प्लस 64 128. ओके, व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ एसी में, लेंथ ऑफ एसी फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, अब देखो 64 ऐसा क्यों किया, क्योंकि 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बाइफरकेट करते हैं, रूट 64 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2. ओके, अब सबको समझ में आ जाएगा ऐसा बाइफरकेट होता है. अब रूट 64 की वैल्यू मालूम है हमें 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2. ओके, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं दिया तो भी चलता है, सो डायरेक्टली वी कैन राइट 8 रूट 2. सो लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू 8 रूट 2. देन राइट द फाइनल आंसर. सो देयरफॉर आंसर लेंथ ऑफ diagonal of the given square is 8 root 2, and what is the unit of that? Centimeter. Let us move to the last example of this practice set. Example is measure of one angle of a rhombus is 50 degree. Rhombus नाम सुनकर ही वो फिगर नजर के सामने आनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए. रोम्बस यानी स्क्वायर जैसा ही होता है लेकिन एक साइड में ढकला हुआ. प्रॉपर्टीज क्या है उसकी? ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर. राइट, ओके. देन लेट दिस, मैं इसको भी नाम देता हूं ए बी सी डी, बिना नाम का तो कोई होता नहीं है. ओके, देन मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री. अब ये तो 50 डिग्री होगा नहीं, तो इसको ही 50 डिग्री करना पड़ेगा, जो छोटा है वो. ओके, अगर ये 50 डिग्री तो अपोजिट 50 डिग्री. द क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स. एक एंगल का मेजर दिया है 50 डिग्री. ओके, उससे हमें दूसरे का भी मिल गया 50 डिग्री, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स. अब उसके लिए क्या करना है? नाउ लेट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड, क्या है? रोम्बस. ओके, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी is equal to 50 degree. Okay, so therefore measure of angle, उसके ऑपोजिट में कौन सा है? DCB. DCB is equal to 50 degree. Okay, ये हमें मालूम है, लेकिन उसका रीजन देना पड़ता है. What is the reason? Opposite angles उसका रीजन ओरली देना नहीं, पेपर पर देना पड़ता है. ऑफ रोम्बस are congruent. This is the reason. ओके, पेपर चेक करते वक्त टीचर को पता चलता है, हाँ इसको तो पूरा मालूम है. ओके, अब बाकी दोनों एंगल का सोचते हैं. अब सोचने के लिए क्या सोचना है? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक दैट दीज 2 लाइंस आर पैरेलल. नाउ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, ये दोनों पैरेलल हैं, ये समझो ट्रांसवर्सल है. तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? ये दोनों हो गए इंटीरियर एंगल्स. ओके, एंड इंटीरियर एंगल्स का एडिशन सम कितना होता है? 180 डिग्री. ओके, साइड
या तो इनको पैरेलल ले लो, नहीं तो इनको पैरेलल ले लो, कैसे जैसे तो आप लोगों को जैसा लगता है वैसा पैरेलल ले लो. साइड AD पैरेलल टू साइड BC, किसको भी पैरेलल ले लो. ओके, AD यानी अभी इनको हमने ऐसे पैरेलल लिए. ओके, और AB को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. एंड line AB is the transversal. Okay, तो उससे क्या होता है? Therefore, measure of angle DAB plus measure of angle DAB यानी ये. ओके, प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अब इसका रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, 8 स्टैंडर्ड में भी रिवाइज हुआ है. ओके, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल DAB क्या है? 50 डिग्री. सो 50 डिग्री प्लस ABC का फाइंड आउट करना है ना हमें, ABC का. सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 50 डिग्री अगर राइट साइड को लिया तो इट बिकम्स -50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री. ये क्या मिला? 130 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल ABC, मेजर ऑफ एंगल ABC यानी कौन सा? दिस एंगल वी गॉट 130 डिग्री. तो उसके अपोजिट का भी क्या रहेगा? 130 डिग्री. हो गए चारों का भी मेजरमेंट. ओके, सो देयरफॉर उसके नीचे लिखो मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसके अपोजिट का कौन सा एंगल? ADC इज इक्वल टू 130 डिग्री. क्या रीजन है? अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, opposite angles of rhombus are congruent. हो गया. ओके, तो therefore आंसर, फाइनल आंसर, the measures of remaining three angles of given rhombus are कितने हैं? 50 डिग्री, 130 डिग्री, then 130 degree. This is the final answer. Here our practice set gets over. Even the video also gets over.